Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We greet you all once again. We greet you all once again in the blessed name of our Lord Jesus Christ. और एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन करते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करीत आहोत। For our meditation, let us turn to 1 Peter 4th chapter verse 7. आज के हमारे ध्यान के लिए पहला पत्रोस 4था अध्याय और उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे। आजच्या आपल्या मननासाठी पेत्राचं पहिलं पत्र 4था अध्याय वचन 7 कडे आपली दृष्टी केंद्रित करूया। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आता सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे, यास्तव मर्यादेने राहा व प्रार्थना करण्यासाठी सावध असा। But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद असो। The end of the things, all the things are at hand. सारे बातों का अंत होना नजदीक है। सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे। Now Peter wrote this about nearly 2000 years ago. पत्रोस इस बात को लिख के केवल करीब 2000 साल से ऊपर हो गया। 2000 वर्षापूर्वी पेत्राने हे लिहिलं आहे। At that time he saw that end was very near. उन दिनों में उसने देखा कि अंत बहुत ही नजदीक है। आणि त्यावेळेस त्याने पाहिलं शेवट अगदी जवळ आलेला आहे। But actually at that time so many prophecies regarding the last days were not fulfilled. और जब वो ये बात लिख रहा था, कई भविष्यवाणियां जो अंत के बारे में थे तब तक पूरा नहीं हुआ था। ज्यावेळेस तो हे लिहित होता त्यावेळेस शेवटच्या दिवसाचे पुष्कळ भविष्यवाण्या पूर्ण झाल्या नव्हत्या। But in spite of all that, he knew there was something, a kind of an end is coming near. इन सब बातों का बावजूद उसको ये मालूम था कि किसी एक तरीका का अंत होने वाला है। पण या सर्व गोष्टी आढळत असताना त्याने पाहिलं की कोणीतरी शेवट होणार आहे। If there is a beginning, there must be an end. एक शुरुआत है तो निश्चित तौर पे एक अंत भी है। जर शेवट आहे तर नक्की सुरुवात आहे तर शेवट पण आहे। You have now started your life, now there's a beginning. But then you cannot go on, there is an end that you have to face it. हम सब अपने जीवन प्रारंभ किया है, उसका एक शुरुआत था, इसका मतलब ये लगातार चलता रहेगा ऐसा नहीं, ये सब का भी एक अंत भी है। आपल्या जीवनाचा आपण आरंभ केलेला आहे, पण लक्षात ठेवा की याचा शेवटही होईल। But the question is, how are you going to face the end? पर यह सवाल ये उठता है कि आप अपने अंत को कैसा सामना करेंगे। परंतु प्रश्न असा आहे की तुमच्या शेवटाचा तुम्ही सामना कसा कराल। There are people who face the end because there was no other alternative. It is written on their head and they face the end. कई लोग अपने अंत को इस तरीका से उसको सामना करता है कि इसके अलावा कुछ तो लिखा नहीं है, यही होना है। आणि याशिवाय काही लिहिलेलं नाही म्हणून अशा रीतीने काही लोक आपल्या जीवनाचा शेवट करीतात। But when you look at the lives of the saints of God, पर आप संतों को जीवनों को यदि देखने से, पण जर तुम्ही संतांचं जीवन पाहिलात, they also face the end, but they face the end in a glorious way. वे लोग भी अपने अंत को सामना किया, पर वे अपने अंत को एक महिमामय तरीका से अंत किया। त्यांचाही शेवट झालेला आहे, परंतु त्यांचा शेवट एक गौरवयुक्त रीतीने झालेला आहे। In the first century, there was a rich young lady, Lady Bertha. और पहले सदी में एक बहुत ही अमीर स्त्री थी जिसका नाम था बर्था। बर्था नावाची पहिल्या शतकात श्रीमंत स्त्री होती। She accepted Christ. वो मसीह को स्वीकार कर चुकी थी। तिने ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे। But for that, she was almost sentenced to be put to death. और उस मसीह को स्वीकार करने की वजह से उसको करीब मृत्यु तक सामना करना पड़ा। आणि ख्रिस्ताचा स्वीकार केल्यामुळे मरणापर्यंत तिला शिक्षा भोगावी लागली। She was already pregnant. और उस समय वो गर्भवती थी। आणि त्यावेळेस ती गर्भवती होती। But the day when she was about to be put to death, और जिस दिन उसका मृत्यू का दिन था, आणि ज्या वेळेस तिला मरणाचा दिवस नियुक्त करण्यात आला होता, she shouted and said, "This is my wedding day." और वो चिल्ला के ऐसे कही कि ये मेरा शादी का शुभ अवसर है। आणि ती ओरडून अशी बोलली की हा माझा लग्नाचा दिवस आहे। Today I am going to meet my bridegroom, the Lord Jesus Christ. आज मैं अपना दुल्हा से भेंट करने वाला हूँ जो यीशु मसीह है। आणि आज मी माझा वर जो येशू ख्रिस्त त्याची भेट घेईल। And Reverend Moody, when he was about to end up his life, और रेवरेंड मूडी अपने अंत के समय में कैसा कहा, आणि रेव्हरंड मूडी त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या वेळेस तो असा बोलला, he said, "Today is my coronation day. I am going to be crowned." आज मैं मेरा
उस सिंहासन में मेरा मुकुट पाने का दिन है। आणि तो म्हणाला, आज मी मुकुट मंडित व्हायचा दिवस आहे. So these saints of God, they face the end victoriously. और ये सब संत लोग अपने अंत को बड़ा जयवंत रीति से समाप्त किया। आणि या संतांनी आपलं जीवन मोठ्या विजयाने संपुष्टात आणलं. Now there is I told you, if there is a beginning, there must be an end. इसलिए मैं पहले से कहा, यदि एक आरंभ है तो उसका एक अंत भी होगा। म्हणून मी सुरुवातीला बोललो, आरंभ असेल तर त्याचा शेवटही आहे. Many people think you are like a candlestick, you are burning and burning and you'll come to the end of nothingness. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन एक मोमबत्ती के मानंद है, जलते जलते शून्य हो जाएगा। आणि काही लोक म्हणतात आपलं जीवन मेणबत्ती सारखं आहे, ते जळून जळून शेवटी नाहीच होतं. But in 1 Corinthians 15 chapter, Paul says, you will take a seed and sow it in the ground. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में संत पौल कहता है, यदि एक बीज बोया जाने से, आणि पहिले कुरिन्थीकर राजपत्राच्या 15 अध्यायामध्ये प्रेषित पौल असं म्हणतो, एक बीज आपण भूमीत पेरले असता It dies, but it shoots out a new plant. वो मरता जरूर है पर एक नया पौधा वहाँ से उगता है। तो बी मरतो, पण त्या ठिकाणी एक नवीन अंकुर बाहेर येतो. Years back, I was in a funeral service. कई साल पहले मैं एक देह संस्कार के सेवकाई में खड़ा था। आणि काही दिवसापूर्वी मी एक अंतिम संस्काराच्या सेवेमध्ये होतो. Many government officers and political leaders all were there. बहुत सारे राजनीतिक नेता और सरकार के अधिकारियां वहाँ पर खड़े थे। सरकारी पुढारी आणि सरकारी अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. Pastor Freddie was speaking at that funeral. उस देह संस्कार के उस सेवकाई में पास्टर फ्रेडी प्रचार कर रहे थे। आणि त्या अंतिम संस्काराच्या सेवेमध्ये प्रेषित पास्टर फ्रेडी बोलत होते. He hardly spoke 10 minutes. शायद वो केवल 10 मिनट तक ही बातचीत किया होगा। ते फक्त 10 मिनिटं बोलले. He said, to many, death is the end. उन्होंने इस प्रकार कहा, कईयों के लिए मृत्यु उनका जीवन का अंत है। त्यांनी म्हटलं, काही लोकांसाठी मरण जणू हे त्यांच्या जीवनाचा शेवट आहे. But to a Christian, death is the beginning. पर एक मसीह व्यक्ति के लिए मृत्यु उसका जीवन का शुरुआत है। परंतु एक ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी मृत्यू हे त्याच्या जीवनाचा शुभारंभ At आहे. the end of the message, the president of the Young Men's Buddhist Association came. और जब उस प्रचार समाप्त हुआ, यंग मेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो संगठन का जो प्रेसिडेंट आया आणि त्यांची सभा संपल्यानंतर जे बुद्धिस्ट असोसिएशनचे जे संचालक त्यांच्या जवळ आले. I am a president of the Young Men's Buddhist Association. उसने कहा, मैं जवानों का उस बुद्धिस्ट संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। आणि मी तरुणांचं जे बुद्धिस्ट संघटन आहे, मी त्यांचा अध्यक्ष आहे असं तो बोलला. But today I know that there is an end, a glorious end waiting for if you walk in the right way. पर आज मुझे ये बात समझ आए कि अगर आप सच्चाई के मार्ग में चलेंगे, आपको एक महिमा में अंत आपका सामना करेंगे। तो बोलला, आज मला कळालं, सत्याच्या मार्गाने चालले असता जीवनाचा शेवट गौरवयुक्त रीतीने होऊ शकतो. In 1 Corinthians 15 chapter verse 24 we read. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 24वें वचन में पढ़ते हैं। पहिले कोरिन्थी 15:24 मध्ये, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा. नंतर शेवट होईल, तेव्हा सर्व आधिपत्य, सर्व अधिकार, सर्व सामर्थ्य ही नाही तशी केल्यावर देवपित्याला तो राज्य सोपून देईल. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. The end comes when Christ, the Son, hands over the government to the Father. अंत तब होगा जब यीशु मसीह सारा अधिकार पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त देवपित्याला सर्व अधिकार व सामर्थ्य सोपवून देईल, त्यावेळेस शेवट होईल. And there will be an eternal kingdom of God. और इसके बाद सनातन परमेश्वर का राज्य आरंभ होगा। आणि त्यानंतर देवाच्या राज्याचा, सनातन राज्याचा आरंभ होईल. For years, scientists began to question matter can never be destroyed. और कई साल तक वैज्ञानिक लोग ये खोज कर रहे थे कि अणु का कोई अंत नहीं हो सकता है, उसका कोई खंडन नहीं हो सकता. आणि शास्त्रज्ञ या गोष्टीचं संशोधन करत होते की अणूचा शेवट होत नाही, तो नष्ट होत नाही. But in the year 1945, when Hiroshima and Nagasaki were destroyed by atomic bombs, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी अणुबम के द्वारा विनाश किया गया, परंतु 1945 मध्ये ज्यावेळेस हिरोशिमा आणि नागासाकी हे त्या अणुबॉम्बने नाश करण्यात आलं, they knew that there is a possibility of end.
end. और तब उनको ये पता चला कि हो सकता है कि सब संसार का एक अंत हो। तर त्यावेळेस त्यांना अनुमान लावलं की सर्वांचा शेवट होणे शक्य आहे. Now recently they discovered something more. और इन दिनों में कुछ ही हाल ही दिनों के पहले वे लोग कुछ नया चीज को आविष्कार किया। आता वर्तमान दिवसामध्ये काही नवीन त्यांनी शोध लावला आहे. In 2 Peter 3rd chapter 10th verse we read, दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय उसका 10वां वचन में, दुसरे पेत्र 3रा अध्याय 10व्या वचनात, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. तरी प्रभूचा दिवस चोरासारखा येईल. त्या दिवशी आकाश मोठा नाद करीत सरून जाईल, सृष्टी तत्वे तप्त होऊन लया जातील आणि पृथ्वी व तिसवरील गोष्टी उघडकीस येतील. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. the word elements will melt with fervent heat. और जो वचन यहाँ लिखा है कि तत्व बहुत ही पिघल जाएगा, इथं लिहिलेले सृष्टी तत्वे तप्त होऊन लयात They जातील. say the word melt has got a special meaning. उस तप्त या उस पिघलने का उसका एक खास अर्थ है करके वे लोग कहे। लयात जातील किंवा वितळून जाईल त्याला एक विशेष अर्थ आहे. It's like that on that day somebody will have the hold and he will lose the hold. और ऐसा वे लोग मानते हैं कि जो इन सारे बातों को पकड़ के रखा है वो उसको छोड़ देगा। आणि त्यांचं अनुमान असं आहे की कोणतरी या सर्व गोष्टीला धरून ठेवलेला आहे आणि शेवटी तो त्याला सोडून टाकेल. In Colossians 1st chapter 17th verse we read, कोलोसियों पहला अध्याय 17 वचन में, कलस्करास पत्र पहिला अध्यायच्या 17 वचनात, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं. And he is before all things, and by him all things consist. all things, yes. तो सर्वांच्या पूर्वीच आहे व त्याच्यामध्ये सर्व समाविष्ट होतात. The word consist means he is taking hold of the whole things. सभी बातें उसी में, इसका मतलब वही सब चीज को संभाले हुए थामे हुए हैं। त्याच्यामध्ये सर्व काय अस्तित्वात आहे म्हणजे सर्व गोष्टी त्याने धरून ठेवलेल्या A आहे. day will come when Christ will lose the hold. और एक समय आएगा जब मसीह इन सब बातों को छोड़ देगा। आणि एक दिवस येईल ख्रिस्त या सर्व गोष्टी सोडून देईल. The moment he lose the hold, there will be a great clash and everything will be melted. और जिस दिन वो सारे बातों के ऊपर का जो पकड़ है उसको छोड़ देगा, सारे बातें पिघल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। या सर्व गोष्टींना धरून ठेवलेले तो घट्टपणा ज्या वेळेस सोडून टाकील त्यावेळेस सर्व काही नष्ट होईल. It's not our opinion, it's a scientific opinion. ये हमारा एक विचार नहीं है, ये वैज्ञानिक लोगों का ये कहना है। हे आमचा अनुमान नव्हे तर वैज्ञानिकाचा निष्कर्ष आहे. Now about the end, we are going to speak to you a little more convincingly. और इस अंत के बारे में आपको थोड़ा और समझाने के लिए हम कहना चाहते हैं। आणि या शेवटच्या गोष्टीबद्दल अजून थोडं काही तुम्हाला समजावून देऊ इच्छितो. But we stand not on our own, but we stand on the word of God. पर हम अपने ऊपर खड़े होकर अपने योजना नहीं, अपने पर परमेश्वर के वचन के आधार पे हम खड़े हैं। आम्ही स्वतः या ठिकाणी नव्हे तर देवाच्या वचनाच्या पुराव्याच्या आधारावर आम्ही उभे आहोत. In 2 Peter 1st chapter 19 to 21, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 19 से लेकर 21 तक, आणि दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 19-20-21 वचना, Peter says we have got a more sure word of prophecy. एक भविष्यवाणी का निश्चय वचन हमारे पास है। आणि तो म्हणतोय भविष्यवाणीचं निश्चित वचन आमच्या जवळ आहे. Now there is a thing called speculation. और ऐसा एक अनुमान करके शब्द है। आणि असा अंदाज म्हणून शब्द आहे. Take for example 10 marbles in your hand. मान लीजिए आपके हाथ में 10 कंचे हैं। आता समजा तुमच्या हातामध्ये 10 मार्बल आहे. Mark one marble with a red ink. और मान लीजिए उसमें से एक कंचे के ऊपर आप लाल स्याही से उसको निशान लगा दिया। आता त्याच्यावर लाल शाहीने तुम्ही खूण केली. Put all the marbles in your pocket. सारे उस कंचों को आप अपने जेब में रखिए आणि सर्व मार्बलचे तुकडे तुमच्या खिशात ठेवा. You try to take that marble marked with red. और आप उस जेब में से उस निशान दिया हुआ उस लाल बाल्टी के उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आणि तुम्ही जे लाल खूण केलेली त्याला खिशातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. Sometimes it may be the first or second or third or fourth, sometimes the 10th attempt you may take it. हो सकता है कि पहली बार में निकल जाए जेब से, दूसरी या तीसरी या कभी 10वां बार में ही निकलेगा। कदाचित पहिल्या वेळेस तुम्हाला काढता येईल किंवा दुसऱ्या तिसऱ्या किंवा 10व्या वेळेही तुम्हाला ते काढता येईल. That means it may or may not. इसका मतलब हो सकता है आपको मिल जाए पहली बार या तो नहीं। याचा अर्थ असा आहे की मिळेल किंवा
मिळणार नाही. But prophecy is not like that. पर भविष्यवाणियां ऐसा अनिश्चित नहीं पण है. भविष्यवाणी अशी नाही. It's a sure word of prophecy. वो एक निश्चय भविष्यवाणी के वचन है. आणि होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या. In 2 Timothy 3rd chapter 16th verse, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसके 16वां वचन. दुसरे तिमोथी 3:16 मध्ये and Paul says all scripture are inspired of God. परमेश्वर का सारा वचन परमेश्वर की ओर से प्रेरणा प्राप्त किया है कि संत पौल कहता है. देवाचे सर्व वचन आत्म्याने प्रेरित झालेले आहेत असं तो म्हणत आहे. Or breathed by God. या तो परमेश्वर की आत्मा से उसको उच्चारण किया गया है. किंवा देवाच्या मुखातून आलेले तो शब्द आहे. That's why in John's Gospel 10th chapter verse 35 Jesus told. इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 35वें वचन में यीशु मसीह कहता है. म्हणून योहान 10:35 मध्ये येशू म्हणाला, Now the word of God cannot be broken. परमेश्वर का वचन टूट नहीं सकता. देवाचं वचन तोडता येत नाही. I'll give one or two examples to prove how the word of God is inspired word of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से प्रेरणा प्राप्त किया हुआ है. इसके लिए एक या दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. देवाचं वचन जे देवाकडून आत्म्याने प्रेरित होऊन आलेलं आहे हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी 2-3 वचन बोलू इच्छितो. In Genesis 3rd chapter 19th verse, God told Adam, उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर आदम से इस प्रकार कहता है. आणि उत्पत्तीचं पुस्तक त्याचं 3रा अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये परमेश्वर आदामाला म्हणत आहे, thou art dust. तुम धूल हो. हा व 19व्या वचनात तो म्हणत आहे की तो माती आहे. Some scientists took a lump of clay और कुछ लोग उस मिट्टी को एक मुट्ठी भर की मिट्टी उठाया. आणि काही शास्त्रज्ञाने मुठभर माती घेतले. they began to analyze what are the chemicals in the lump of clay. उस वैज्ञानिक लोगों ने इसका परीक्षण करने का कोशिश किया. उस मुट्ठी भर मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स है. त्या मातीच्या चिखलामध्ये काय काय तत्व आहे हे पाहण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलं. There was calcium, कैल्शियम उसमें था. त्यामध्ये कॅल्शियम आहे, phosphorus, फॉस्फरस था. फॉस्फरस आहे, potassium, पोटेशियम उसमें था. पोटॅशियम आहे, sodium, सोडियम उसमें सोडियम आहे, magnesium, मैग्नीशियम मॅग्नेशियम आहे, iron, और लोहा, आयन आहे, oxygen, ऑक्सीजन, ऑक्सिजन आहे, chlorine, क्लोरीन, क्लोरीन आहे, carbon, कार्बन, कार्बन आहे, hydrogen, हाइड्रोजन, हायड्रोजन आहे, nitrogen, नाइट्रोजन, नायट्रोजन आहे sulfur. सल्फर. आणि सल्फर. All these chemicals are found in the human body. ये सारे रासायनिक पदार्थ जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है. हे सर्व जे तत्व आहे ते मनुष्याच्या जीवनामध्ये आढळून येतात. God told Adam, you are dust. परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम धूल हो. परमेश्वर आदामाला म्हणाला तू माती So आहेस. when he told you are dust, he clearly told that man life is like a dust. परमेश्वर जब आदम से कहा कि तुम्हारा जीवन धूल है, उसने यही भविष्यवाणी किया कि तुम धूल के मानंद है, डस्ट के मानंद है. आणि ज्यावेळेस परमेश्वर आदामाला म्हणाला तू धूळ आहेस याचाच अर्थ परमेश्वराने त्याला सांगितलं की तू धुळीतून आलेला आहे. Second example is Ecclesiastes 1st chapter verse 6. दूसरा उदाहरण सबोपदेशक पहला अध्याय उसका 6वां वचन. सबोपदेशक पहिला अध्याय त्याचं 6वं वचन. The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है. वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है. From the north pole to the south pole, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक आणि वायू दक्षिण ते दक्षिण दिशेकडे the wind blows down and then swirls and take a turn and go back again. हम देखते हैं कि वायु जो है हवा दक्षिण ध्रुव तक जाके एक पलट करके वो वापस उत्तर ध्रुव की ओर जाती है. तो एकसारखा घुमत जातो आणि पुन्हा तो फेरी मारून पुन्हा त्याच्या ठिकाणी येतो. This factor scientists were able to find it out in 17th century and in 19th century. और ये सच्चाई जो है वैज्ञानिक लोग 17वीं सदी में और 19वीं सदी में जाकर खोज निकाला. आणि 17व्या शतकात आणि 19व्या शतकात वैज्ञानिकांनी याचा निष्कर्ष लावला. But Solomon wrote 3000 years before how the circulation of the wind is. पर there. सुलेमान राजा इस पृथ्वी में जो हवा घूमती है इस विषय के बारे में 3000 साल पहले कहा था. परंतु सुलेमानने 3000 वर्षापूर्वी पृथ्वीमध्ये वायुचक्र कसे असतात याचा निष्कर्ष सांगितला आहे. In one university, the professor asked hydraulic engineers to give certain dimensions of measurement to build a particular ship. एक महाविद्यालय में जो प्रोफेसर था हाइड्रोलिक या पानी के जो इंजीनियर लोग हैं उनसे कहा कि एक सही जहाज का नाप आप बताइए.
आणि या एका युनिव्हर्सिटीमध्ये पाण्यावरचे जे संशोध करणारे शास्त्रज्ञ असतात त्यांनी सांगितलं की पाण्यावरचं एक जहाजाचा एक दृष्टी किंवा नमुना तुम्ही सांगा. They all gave different measurement, but it could not fit. और उन्होंने अलग अलग तरीके का नाप दिया, पर उसमें से कोई भी नाप सही जहाज के लिए नहीं था. वेगवेगळे मोजमाप त्यांनी दिलं, परंतु त्या जहाजासाठी कोणतंच व्यवस्थित बसलं नाही. Finally, this professor told, और आखिरी में इस प्रोफेसर ने कहा, आणि शेवटी हा प्राध्यापक बोलला, I am not a Christian. मैं एक मसीह व्यक्ति नहीं हूँ. मी ख्रिस्ती नव्हे, Most of you are Christians. पर आप में से अनेक सारे लोग मसीह लोग हैं. तुमच्यापैकी पुष्कळ ख्रिस्ती आहे. Read your own Bible. आप अपने बाइबल को ही पढ़िए. तुमचं बायबल तुम्ही वाचा. God gave measurements to the Noah ark. और परमेश्वर नूह को जहाज बनाने के लिए एक नाप दिया था. परमेश्वराने नोहाला तारू बनवण्यासाठी एक मोजमाप दिली. If you make a ship according to the measurement, it will never sink. और नूह के उस जहाज के जो नाप है, उस नाप के अनुसार अब जहाज बनाने से वो कभी नहीं डूबेगी. नोहाला दिलेल्या दारूच्या नापाप्रमाणे नमुन्याप्रमाणे जर तुम्ही तारू बनवलं तर ते बुडायचं नाही. They made a model Noah ship in the same measurement. और एक वैल्यू का नमूना बनाया जो उस नूह के जहाज के नाप के अनुसार था. नोहाच्या तारू समान त्या मापामध्ये त्यांनी एक जहाज बनवलं. They made different models of ship also. और इसके साथ साथ कई और भी नमूनों को वे लोग बनाए. आणि त्याचबरोबर वेगवेगळे नमुन्याचे अजूनही जहाज त्यांनी बनवलं. They created a kind of a stimulation by that. They created how the flood will come and how what a velocity be, or the speed of that water will be there. और वे लोग ऐसा भी एक संशोधन करके वे लोग निकाला कि किस प्रकार उस दिनों में बाढ़ आए होंगे, किस प्रकार उस बाढ़ का वेग रहा होगा, पानी कैसे निकला होगा. आणि त्यांनी या गोष्टीचा अंदाजा लावला. त्या दिवसामध्ये पूर कसा आला असेल, वादळ कसं आलं असेल आणि त्याचा मार्ग कसा असेल याचा अंदाज त्यांनी लावलं. And they allowed Noah's model ship and other ship also float in that. और उस तेज से बहने वाले पानी के अंदर नूह का बनाया हुआ जहाज और बाकी जो नमूने थे जहाजों का, उन सबको भी उसमें छोड़ दिया. आणि त्या पाण्यामध्ये ज्या ठिकाणी पुष्कळ प्रवाहाने वागतात पाणी आहे त्यामध्ये नोहाचा तारूचा माप आणि इतर त्यांनी सर्व पाण्यात सोडलं. All the models were drowned. बाकी सारे जहाज के नमूने जितने थे वे सब पानी में डूब गए. बाकी सर्व तारूचे पाण्यामध्ये बुडाले. Only Noah's model ark ship stood firm. केवल नूह का जो नमूना था जहाज का, उसके नमूना में बनाया हुआ केवल बच गया, बाकी सब डूब गए. फक्त नोहाच्या दिलेल्या मापाप्रमाणे बनवलेला जो तारू आहे तो पाण्यावर तरंगू लागला. So we stand on the word of God, which is now confirmed by the scientists now. और हम उस वचन के आधार पे खड़े हैं जो आज विज्ञान स्थापित कर चुका है. आणि आम्ही त्या वचनाच्या आधारावर उभे आहोत ज्याला संशोधकांनी मान्यता दिलेली आहे. We believe in God. हम परमेश्वर पे विश्वास करते आम्ही हैं. देवावर विश्वास ठेवतो. Without that belief, you cannot survive. और इस विश्वास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. विश्वासाशिवाय आम्हाला जीवन जगता येणार नाही. But we believe in a personal God, not impersonal God. हम एक व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में जानते हैं, मानते हैं, एक आम रीति का नहीं. आणि आम्ही एक व्यक्तिगत देवाबद्दल ओळखतो आणि त्याबद्दल मला माहिती आहे. In America, Atheist Association made a kind of a petition to the court. और अमेरिका में जो नास्तिक के संगठन जो था वो कोर्ट में जाके एक विनती किया. आणि अमेरिकेमध्ये नास्तिक संघटनेने कोर्टमध्ये एक याचिका दाखल केली. All the religions have got their Founders Day and other day as a holidays. और सारे लोग, सारे संसार के सारे धर्म जो है उनका एक स्थापना करने वाला का जन्मदिन या तो कुछ खास उनका दिन होता है. आणि सर्व जे धर्म संस्थापक आहे त्यांचा संशोधकाचा एक दिवस असतो. But we don't believe in God. और हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं पण करते आम्ही हैं. तर देवावर विश्वास ठेवत Why नाही. not have a holiday for us? इसलिए हमारे लिए भी क्यों ना एक छुट्टी या एक छुट्टी का दिन दिया जाए. आमच्यासाठी पण एक सुट्टीचा विशेष दिवस का होऊ नये. The judge rejected the application. और जो न्यायपति जो है उसके जो सवाल जो उनको पेटिशन को तिरस्कार किया. आणि न्यायाधीशाने त्यांची याचिका जी आहे अमान्य केली. They got angry. और वे सब क्रोधित हो गए. आणि ते सर्व रागिष्ट झाले. Why did you reject our application? क्यों हमारे विनती को आपने उसको इनकार किया है. आमची याचिका का तुम्ही रद्द केली. He told already a day is given for you as a holiday. और आपके लिए तो एक दिन पहले से छुट्टी का मान के दिया है. तो म्हणाला पहिलेच तुमच्यासाठी सुट्टीचा दिवस दिलेला आहे. They said, what is the date? और उन्होंने पूछा कौन सा दिन. ते म्हणाले कोणता दिवस. April 1st. और वे कहा कि अप्रैल 1 तारीख है. एप्रिल 1 तारीख. April 1st is All Fools Day. अप्रैल 1 तारीख सारे मूर्खों का दिन. एप्रिल 1 तारीख म्हणजे सर्व मूर्खांचा दिवस आहे. You don't believe in God, you are a fool. आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं
इसलिए आप मूर्ख हो। तुम्ही देवावर विश्वास ठेवत नाही म्हणून तुम्ही मूर्ख आहात. And government has given All Fools Day as a holiday. इसलिए पर जो गवर्नमेंट जो है ऑल फूल्स डे जो है मूर्खों का दिन खास आपके लिए ही दिया है। म्हणून सरकारने जे मूर्खांचा एक दिवस तुमच्यासाठी दिला आहे. Now the question comes, if there is a God, और अभी ये सवाल आता यदि कोई परमेश्वर हो तो आता दुसरा प्रश्न असा आहे, जर एखादा देव आहे, how do we know that there is a God? हमें ये कैसा पता चलेगा कि सच में एक परमेश्वर है? आम्हाला कसं कळून येईल की एक परमेश्वर आहे? Now by two things. दो बातों के द्वारा हम समझ दोन सकते हैं। गोष्टीद्वारे. Look at the world around you. हम चारों तरफ जो दुनिया है उसे आप देखने से या जगाच्या चारी बाजूला दृष्टी लावा. The mountains and the deep valleys. ऊंचा पहाड़ और गहरा तराई आणि उंच जे पहाड डोंगर आहेत आणि खालच्या टणी आहेत The deep oceans. और गहरा समुन्दर आणि गहरे समुद्र आहेत. The jungle, the animals and the birds and the fishes all confirm that there is a God behind it. सारे वन और उसके जानवर उस पेड़ में और आकाश के पक्षियां ये सारे बातें ये स्थापित करता है कि एक सच्चा परमेश्वर है। सर्व जंगल पाणी त्यातले जंतू आणि हे डोंगर आणि हे झाड या सर्व देव आहे या गोष्टीची प्रचिती देतात. There is a bird called Siberian bird. एक ऐसा एक पक्षी है जो साइबेरियन नाम से जाना जाता है। सायबेरियन नावाचा एक पक्षी आहे. It crosses Mount Everest 28,000 feet height and comes to India. वो ऊंचा जो पर्वत शिखर एवरेस्ट है उसके ऊपर 28,000 फीट ऊंचाई से उसको पार करके भारत पे आता है। आणि एव्हरेस्टचे जे डोंगर जे आहे 20,000 फुटाचं ते ओलांडून ते भारतामध्ये येतं. No bird can fly on that height without oxygen. और उस ऊंचाई में कोई और पक्षी ऑक्सीजन के सहारे के बिना उड़ नहीं सकता। त्या उंच शिखरावर ऑक्सिजन किंवा वायूच्या शिवाय कोणी उडता येणार नाही. Now they have discovered और अभी वे लोग इसका खोज निकाला है आता त्यांनी निष्कर्ष on काढलं that height there's an air current passes. और वे लोग ये पता किया कि उस ऊंचाई में हवा का एक खास बहाव है। आणि त्या ठिकाणी त्यांनी अनुमान लावलं की निष्कर्ष लावलं त्या ठिकाणी वाऱ्याचा एक प्रवाह आहे. These birds go and float and come out. और ये पक्षियां उस हवा की बहाव में जाके वहां पर उड़ता रहता है, अपने पंखों को फैलाता है, हवा उन्हें ले जाता है। आणि हा पक्षी वर जातो आणि त्या वाऱ्यावर तरंगतो आणि तो वारा त्याला पुन्हा घेऊन येतो. Who gave this wisdom? ये ज्ञान उन्हें कौन दिया? हे ज्ञान त्या पक्ष्यांना कोण दिलं? They say it's very difficult to find out which is male penguin or a female penguin. और इस पेंगुइन पक्षियां जो है उसका मेल और नर या नारी ये कौन सा है पता हे करना पक्षी मुश्किल है। स्त्री आहे स्त्रीलिंगात आहे का पुल्लिंगात आहे हे शोधणं अवघड आहे असं ते म्हणतात. Generally, the male penguin takes some pebbles and throw it before the other penguin. और आम रीति से देखने से कुछ छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा इस पुरुष या नर जो पक्षी है उठा के उस नारी जो उस पक्षी के सामने फेंकता है। It will throw it before any penguin. माता के सामने फेंकता है। आणि हा जो पुल्लिंगचा पुरुष जो नर पक्षी आहे हे काही धोंडे घेऊन तो फेकतो. If the penguin is a male penguin, it will throw it away. अगर उस नर या एक पक्षी अगर नर है तो उस पत्थर को फेंक देगा। नर पक्षी असेल तर ते धोंड फेकून देतो. But if a female penguin, it will bow its head and take those pebbles. अगर उस पक्षी माता है तो वो झुक के उस पत्थर को उठाएगा। आणि ती मादा असेल तर ती वाकून ते धोंडे एक एक उचलून घेणार. Who gave this wisdom? ये ज्ञान कौन उनको दिया? हे ज्ञान त्यांना कोण The दिलं? God behind it. एक परमेश्वर सबका पीछे है। परमेश्वर या सर्व मागे Look at आहे. your own body. आप अपने शरीर को ही देखिए। तुमचे शरीर तुम्ही पहा. Nearly 95,000 kilometers of blood vessels are going round. हमारे शरीर में जो रक्तों का कोशिका करीब 95,000 किलोमीटर लंबा है। 95,000 किलोमीटर लांबीचे पेशी आपल्यामध्ये वाहतात. 1,12,000 kilometers of blood stream is in your body. 1,12,000 किलोमीटर लंबा लहू शरीर में बहता रहता है। 1,12,000 मीटर लांबीचा जो रक्त प्रवाह आपल्यामध्ये वाहत असतो. Your heart is only 450 grams weight. हमारा हृदय जो है केवल 450 ग्राम वजन का है। 450 ग्रामचं आपलं जे हृदय आहे. If you live about 70 years, यदि आप 70 साल तक जीवित रहते हैं जर तो तुम्ही 70 वर्षापर्यंत जिवंत असता 3 lakh tons of blood you would have pumped from your heart. आपके हृदय से 3 लाख टन लहू को आप पंप किया होगा या शरीर भर पहुंचाया होगा। 3 लाख टन जे रक्त आहे आपल्या शरीरामधून आपण पंप करून पूर्ण शरीरामध्ये पसरवलं असेल. In Kerala, in Ernakulam, when an engineer heard this, केरला में एर्नाकुलम जगह में एक इंजीनियर इस बात को जब सुना, केरळाच्या एर्नाकुलम ठिकाणी एका अभियंताने ज्यावेळेस ही गोष्ट ऐकली, Pastor, this is not possible in our vocabulary.
और पास्टर जी ये हमारे ज्ञान में ये हो ही नहीं सकता। आमच्या शब्दामध्ये पास्टर ही होऊ शकत नाही. You can never make an instrument which can pump over 70 years without even a gap. और हम ऐसा कोई भी यंत्र कभी आविष्कार नहीं कर सकता जो 70 साल तक लगातार बिना रुके उस लहू या पानी को पंप कर सके। 70 वर्षापर्यंत सातत्याने पंप करणारं यंत्र असं आम्हाला बनवता येणार नाही. Read Psalms 147 verses 4 and 5. भजन संगीता 147 उसका 4 और 5 पढ़िए। स्तोत्र 147 वचन 4 व 5 वाचा. वह तारों को गिनता तारों का गिनता है. और उनमें से that would. तो तारांची गणती करीतो. He telleth the number of the He stars. telleth the number of the stars. वो तारों को गिनता है। तो ताऱ्यांची गणती करीतो. One Ptolemy, he counted the stars and he counted 1056 stars. और टोलोमी करके एक व्यक्ति उन्होंने 1056 उस तारों को गिना। टोलमी नामाच्या व्यक्तीने 1056 असं तारे मोजले फक्त. Another scientist counted 777 stars. और एक वैज्ञानिक 777 तारों को गिना। आणि दुसऱ्या वैज्ञानिकाने 777 तारे मोजले. And Kepler, he counted 1005 stars. और केपलर जो वैज्ञानिक था उन्होंने 1005 तारों को गिना। आणि केपलर नावाच्या शास्त्रज्ञाने 1005 तारे But मोजले. now they say 100 billion stars are there. पर अभी वे लोग कहते हैं कि 100 बिलियन ताराएं हैं। आणि आता म्हणतात की 100 मिलियन तारे आहेत. So there is a God. ऐसा एक परमेश्वर भी है। असा एक परमेश्वर आहे. And that God is a God, a personal God. और उस परमेश्वर जो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। आणि तो परमेश्वर व्यक्तिगत देव आहे. He is a holy God. वो एक पवित्र तो परमेश्वर पवित्र है। देव He is आहे. a God of love. वो एक प्रेम का परमेश्वर तो है प्रीतीचा देव He is आहे. a God of humility. और नम्रता का वो परमेश्वर है। आणि नम्र देव आहे. He is a God of truth. वो सच्चाई का परमेश्वर है। तो सत्याचा देव आहे. He is God of righteousness. और धार्मिकता का परमेश्वर तो है। नीतिमत्वाचा देव आहे. So remember, we are not telling something fable. It is really we are standing on facts and telling this. आप ये ध्यान दीजिएगा, हम कोई कहानियां आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं, सच्चाई के आधार पे खड़े होकर आपको बोल रहे हैं। आम्ही तुम्हाला गोष्ट बोलत नाही तर सत्य वचनाच्या आधारावर उभे राहून तुम्हाला शिकवत आहोत. But in Isaiah 45 verse 15 we read, यशायाह 45 उसका 15 में पढ़ते हैं। यशा 45 त्याच्या 15 वचनामध्ये, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है. हे इस्रायलाच्या देवा, तारका, तू खचित गूढ देव आहेस. Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. such a God who created all these things hiding himself. इतना परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का रचना किया है वो अपने आप को गुप्त रखता है। इतक्या मोठ्या सर्व सृष्टीची रचना केलेला देव स्वतःला गुपित ठेवला आहे. You want to see the God, you want to hear the voice of God, you want to experience that God, but you are unable to know because he hiding himself. आप उस परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर वो अपने आप को गुप्त रखा है। त्या परमेश्वराला तुम्ही पाहू इच्छिता, त्याचा ऐकू इच्छिता, शोध घेऊ इच्छिता, परंतु त्याने स्वतःला गुपित ठेवलं आहे. When everything goes well, you say, it is because of my luck, it is because of my ability, I got all these things. और सब कुछ जब ठीक चलता आप कहेंगे ये मेरा नसीब है, ये मेरा एक अच्छा अवस्था था कि मैंने सब प्राप्त किया। आणि सर्व काही व्यवस्थित चाललं तर तुम्ही म्हणता हे माझं नशीब आहे की सर्व काही व्यवस्थित आहे. When somebody comes and steals your money, तो क्यों खुदा ऐसा ले दिया? Why God allowed this? और जब आपका पैसा कोई आके चोरी करता है तो आप सवाल करते हैं क्यों खुदा ऐसा अनुमति आणि दिया? तुमचे पैसे जर कोणी चोरून नेलं तर तुम्ही म्हणता देवाने असं का होऊ दिलं. When everything goes well, there is no mention about God. और जब सब कुछ ठीक चलता है परमेश्वर का नाम निशान नहीं। सर्व काही व्यवस्थित चालले असतात देवाचं नाव लवशेष नाही. When anything goes wrong, immediately you blame God. और कभी कुछ विनाश या नुकसान होने से तुरंत खुदा ने किया, परमेश्वर ने किया। ज्यावेळेस काहीतरी तोटा होतो त्यावेळेस आपण म्हणतो देवाने क्या केलं. People first thought he was a great power. और आदि में परमेश्वर एक केवल सामर्थ्य करके लोग सोचते थे। आणि सुरुवातीला परमेश्वर एक मोठं सामर्थ्य असं लोकांची कल्पना होती. They were afraid. और उस सामर्थ्य को देख के वे घबराते थे। त्यामुळे ते लोक भीती बाळगत असे. He's a consuming fire. वो एक धधकने वाला, सब कुछ नाश करने वाला आग के तो मारे एक भस्म करणारी अग्नी आहे. Then they knew he is a God who lived in distant heaven,
He does not care about our problem. और दूसरा बात वे लोग ये समझ गया कि एक परमेश्वर है जो बहुत दूर स्वर्ग में रहता है, हमारा समस्या के बारे में वो अपरिचित है. आणि दुसरी गोष्ट देवाबद्दल अशी होती की परमेश्वर खूप लांब आहे, आपल्या गोष्टी त्याला काही काळजी नाही. But when Jesus came into the world, पर जब यीशु मसीह इस जगत में आया, पण ज्यावेळेस येशू या भूतलावर आला, He gave a new dimension or new thought about our God. तब परमेश्वर के बारे में एक नया दृष्टिकोण, एक नया विचार लोगों के बीच में आया. मग देवाबद्दल मनुष्याला एक नवीन मार्गदर्शन त्यांनी केलं. Before that revelation, Jews got another revelation. God is the master. और इस प्रकाशन लोग तक पहुंचने से पहले यहूदियों के बीच में परमेश्वर के बारे में एक समझ था कि वो एक अधिकारी है. आणि ही गोष्ट लोकांपर्यंत पसरवण्या अगोदर यहुदी लोकांमध्ये अशी एक धारणा होती की तो स्वामी आहे. They worshipped him as Bali. और बाली करके वे लोग उसको मानते थे. आणि तो बाली म्हणून लोक त्याची उपासना करीत असे. God wanted them to worship himself as Ishi, as husband. और परमेश्वर ये चाहता कि वे लोग उन्हें ईशी करके या तो एक पति करके उनका आराधना आणि करें. देवाची इच्छा होती की लोकांनी त्यांना ईशी किंवा त्याचा पती म्हणून स्वीकारावं. But when Jesus came into the world, पर जब यीशु मसीह इस जगत में आया, पण ज्यावेळेस येशू या भूमीवर आला, he who has seen me has seen God. और इसने यीशु कहा जो मुझे देखा है वह परमेश्वर को देखा. येशू म्हणाला ज्यांनी मला पाहिलं त्यांनी परमेश्वराला पाहिलं आहे. You are searching for God, you need not go here and there. In Jesus we find our God. आप परमेश्वर को खोजते थे, इधर उधर जाते थे, अभी कोई जरूरत नहीं मुझे देखो या यीशु को देखो. तुम्ही देवाचा शोध करून इकडे तिकडे जात असता, आता तसं जायची गरज नाही, तुम्ही मला पहा. And this God is a father like God. और ये परमेश्वर एक पिता के मानित परमेश्वर आणि है. हा परमेश्वर एक पित्या समान आहे. After the Second World War, दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुसऱ्या महायुद्धानंतर German Christian went to Vienna, the capital city of Austria. और ऑस्ट्रिया देश के राजनगरी वियना में जर्मन देश के मसीह लोग गए. आणि जर्मन देशचे जे ख्रिस्ती लोक आहेत त्यांच्या राजधानीमध्ये ज्यावेळेस गेले, They call all the Christian leaders. वे लोग सारे मसीह नेताओं को वहां पर बुलाए. सर्व ख्रिस्ती लोकांना त्या ठिकाणी बोलावलं. During the Second World War, our troops almost destroyed their country. We ask pardon for that. और दूसरे विश्व युद्ध में हमारा सैनिक उस देश को करीब करीब नाश कर चुका था, इसलिए हम आपसे माफी आणि मांगते हैं. दुसऱ्या युद्धामध्ये आमच्या देशाने ते सर्व नाश केलं होतं म्हणून आम्ही त्याबद्दल माफी मागतो. One Christian stood up. उसमें से एक मसीह खड़े हुए त्यापैकी एक ख्रिस्ती उभा राहिला. We will not forgive you. और उन्होंने कहा हम आपको माफ नहीं ते करेंगे. म्हणाले आम्ही तुम्हाला क्षमा करणार नाही. Go and ask every stone in Vienna city. और इस वियना शहर के हर एक पत्थर से जाके पूछो. व्हिएन्नाच्या शहराच्या प्रत्येक धोंड्याला जाऊन तुम्ही विचारा. They will tell how much blood you shed in our land. तब वो पत्थर उस चट्टान जवाब देगा कि कितने लहू इस शहर में आप लोगों ने बहाया आणि है. त्यावेळेस ते खडक म्हणेल की किती रक्त तुम्ही त्या ठिकाणी सांडलेलं आहे. So the German Christian did not know what to do. उस जर्मन मसीह लोग इसके क्या जवाब देना उन्हें नहीं मालूम. जर्मन ख्रिस्ती लोकांकडे ह्याचं उत्तर नव्हतं. They all stood up. वे लोग सब खड़े हो ते सर्व उभे राहिले. And the leader of the German Christian, और उस जर्मन मसीहों का जो नेता था, आणि जर्मनी लोकांचा जो नेता होता, he recited the Lord's Prayer. उन्होंने उस प्रभु की प्रार्थना को उन्होंने उच्चारण किया. प्रभूची प्रार्थना ते बोलू लागले. Our Father which art in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है. या आमच्या पित्या जो स्वर्गात आहे. Immediately that Vienna Christian leader, please stop it. और तुरंत उस वियना के मसीह नेता ने कहा रुकिए, आप यहाँ रुक जाए. व्हिएन्नाचे ख्रिस्ती व्यक्ती बोलला थांबा, इथे तुम्ही थांबा. If God is our Father, यदि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जर परमेश्वर आमचा पिता आहे, He is your Father, He is our Father. यदि वो आपका परमेश्वर और हमारा भी है, तो तुमचा आणि आमचा दोघांचा जर आहे. How can we have bitterness? How can we say we don't forgive you? और तब हम कैसे आपस में कड़वाहट रख सकते हैं? तब हम कैसे आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे? तर आम्ही आपसामध्ये एक दुसऱ्यांना का क्षमा करणार नाही? We forgive you. हम आपको माफ करते हैं. आम्ही तुम्हाला क्षमा A करतो. God like a father. हमारा परमेश्वर एक पिता के मानंद. आमचा परमेश्वर पित्या समान आहे. Moses wanted to see this God. मूसा इस परमेश्वर को देखना चाहता था. मोशे या देवाला पाहू इच्छित होता. God told no man can see me and live in this world. परमेश्वर कहा मुझे कोई भी मनुष्य देख के इस जगत में जीवित नहीं रह सकता. परमेश्वर बोलला मला पाहून कोणी या भूतलावर जिवंत राहू शकत But I नाही. will place you on a rock. और इसलिए मैं आपको एक चट्टान पे खड़ा करूंगा. मी तुला खडकावर उभं That करीन. rock is a broken rock. उस चट्टान एक टूटा हुआ एक दरार वाला आणि चट्टान ते है. तुटलेलं खडक आहे. My glory will pass before you. मेरा महिमा आपके सामने से जाए. आणि माझं गौरव तुझ्या समोरून जाईल. You will see the back of my glory, not the front of my मेरा glory. उस
महिमा का पिछला भाग आप देखेंगे सामने नहीं। आणि माझा गौरवाचा पाठमोरा तू पाहशील. That rock is Jesus Christ. उस चट्टान जिसपे मूसा खड़ा था वो यीशु मसीह तो है। खडक म्हणजे ख्रिस्त होता. According to Isaiah 59 verse 2, ऐसा 49 उसका 2, यशा 59 वचन 2 मध्ये our sins have separated us from this loving God. 59:2 उसमें लिखा है कि हमारा पाप उस परमेश्वर से हमें अलग किया है। आमच्या पापामुळे या देवापासून आम्ही विभक्त झालो असं लिहिलं It आहे. is not that God hideth, because of our own sin we cannot come closer to God. ये परमेश्वर की वजह से नहीं बल्कि हमारे पाप की वजह से हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। देवामुळे नव्हे तर आमच्या पापामुळे आम्ही देवाजवळ जाऊ शकत नाही. There are two types of sins. 2 किस्म के पाप होते 2 हैं। प्रकारचे पाप आहेत. Murder, एक है हत्या हत्या करणे, adultery, और व्यभिचार, व्यभिचार, stealing, चोरी करना चोरी करणे, deliberate lie. और जानबूझ के झूठ बोलना। जाणून बुजून खोटं बोलणं. These are all deliberate acts of sin. ये सब पाप का जो हम क्रिया पे लाने वाले पाप। आणि क्रियारूपाने करणारे पाप आहेत. But Jesus gave another look into that sin. पर इन पापों के बारे में एक और दृष्टिकोण यीशु मसीह ने दिया। या पापाबद्दल प्रभू येशू ख्रिस्ताने अजून एक दृष्टिकोन दिला. You may not take a knife and kill a man, आप एक छुरी लेके चाकू लेके किसी व्यक्ति को हत्या नहीं किया हो, तुम्ही सुरी घेऊन कदाचित दुसऱ्यांची हत्या केली नसेल, but if you say with an anger in your heart, thou fool, to your brother, आप अपने भाई को गुस्सा के साथ कहें यदि हे मूर्ख, आणि तुम्ही रागाने तुमच्या भावाला जर मूर्ख म्हणाला, that very anger has killed that brother. उस गुस्सा आपके क्रोध उस भाई का हत्या कर चुका है। आणि तो राग त्या भावाचा हत्या करण्यासारखाच आहे. One of our believer, she is our believer, but her husband was not a believer. एक हमारा विश्वासी बहन, उनका पति विश्वासी नहीं था, आणि आमची विश्वासी बहीण होती, तिचा जो नवरा होता त्याचं तारण झालं But her नव्हतं. husband was holding a very good, very high office. और उनका पति जो है बहुत ही ऊंचा अधिकार एक गवर्नमेंट में रखता था। आणि तिचा पती सरकारच्या ऑफिसमध्ये एक मोठ्या पदवीवर होता. So one day he came and told his wife, एक दिन उस व्यक्ति आके अपने पत्नी से इस प्रकार कहा, एकदा येऊन आपल्या पत्नीला तो असं म्हणाला, that's a beautiful woman in my office. मेरे दफ्तर में एक बहुत सुंदर स्त्री है। आणि माझ्या ऑफिसमध्ये एक सुंदर स्त्री आहे. Then our believer told, whether you look it or not, I don't care. You go. That's और उस पत्नी ने कहा आप उस स्त्री को देखे या ना देखे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आणि ती आपली विश्वासी स्त्री म्हणाली, तुम्ही तिला पहा अगर पाहू नका, त्याच्याशी माझं काय घेणं देणं नाही. No, no. और पति ने कहा नहीं नहीं इस बात ऐसा नहीं है। तो पती म्हणाला, अशी If गोष्ट I नाही. look itself, it's a sin. मैं यदि उसको देखा इसका मतलब ही पाप हो गया। जर मी तिला पाहिलं तर ते एक पाप आहे. She said, how do you get to know? You are a Hindu. How do you get to know it? हाँ, तब उन्होंने जवाब दिया स्त्री ने कि आप तो एक हिंदू व्यक्ति है, आपको ये जानकारी कहाँ से मिला? आणि ती स्त्री म्हणाली, तुम्ही तर ख्रिस्ती नाही, तर ही जानकारी तुम्हाला कुठून मिळाली? Your Bible says. तो उसका पति ने कहा तुम्हारा बाइबल में लिखा है। तो म्हणाला, तुझ्या बायबलमध्ये लिहिलेला आहे. Many of us read the Bible, we don't put it in our action. कई बार हम बाइबल पढ़ते जरूर है पर उसको हम अपने जीवन में लाते नहीं। पुष्कळदा आम्ही शास्त्र वाचतो पण आपल्या जीवनामध्ये त्याला आपण आणत One नाही. of the prevalent sin in our midst is lying. हमारा जीवन में अधिकांश में पाया जाता हुआ एक पाप वो है झूठ। आणि आपल्या जीवनामध्ये एक महत्वाचं आढळून येणारं पाप म्हणजे खोटं बोलणे. We hate murder, breaking the 7th commandment, stealing, but we tell lies as lies. हम हत्या करना या 7वां उस आज्ञा को उल्लंघन करना बाकी सबको बड़े पाप मानते हैं पर आम तौर से झूठ बोलते हैं। हत्या करणे, 7वी आज्ञा मोडणे हे सर्व तर आपण करत नाही, पण खोटं बोलणे हे पाप आपण करतो. In Isaiah 65 verse 16 we read, यशायाह 65 उसका 16 में पढ़ते हैं, यशा 65 त्याच्या 16 वचनामध्ये the God of truth. वह सच्चाई का परमेश्वर है। तो सत्याचा देव आहे. In Zechariah 8 chapter 3rd verse we read, जकरिया 8वां अध्याय उसके 3रे वचन में पढ़ते हैं, जकरिया 8व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनामध्ये it's a city of truth. एक सच्चाई का शहर है। ते सत्याचं नगर आहे. Read Psalms 15 verse 1 and 2. भजन संगीता 15 उसका पहला 2 वचन पढ़। स्तोत्र 15 त्याचं पहिलं आणि दुसरं वचन. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है. हे परमेश्वरा, तुझ्या मंडपात कोण वस्ती करील? तुझ्या पवित्र डोंगरावर कोण राहील? जो सात्विकतेने चालतो व नीतीने वागतो, आपल्या मनापासून सत्य बोलतो. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. And Isaiah 59 verse 14. यशायाह 59 उसका 14। और यशा 49 त्याचं 14 वचन. न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया.
सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती. न्यायाला मागे ढकललेले आहे, धार्मिकता लांब उभी राहिली आहे, कारण चव्हाट्यावर सत्य अडखळून पडले आहे, तेथे सरळतेचा प्रवेशच होत नाही. And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. 2 years back, I was pained to note how children of God, even responsible people, tell lies. और 2 साल पहले मुझे इस बात सुन के बहुत ही दर्द हुआ कि कैसे लोग, परमेश्वर के जन और अधिकार में रखने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं. देवाची लोक, अधिकारी लोकही कसं खोटं बोलतात हे ऐकून खरोखरच मला खूप दुःख झालं. Then God gave this verse. तब इस वचन परमेश्वर ने मुझे दिया. त्यावेळेस परमेश्वराने यशाया 59:14 हे वचन मला दिलं. Truth is fallen in the street. और सच्चाई मार्ग में, सड़क पे गिर गया. आणि न्यायाला मागे ढकलण्यात आला आहे. Remember, if you tell a lie, आप याद कीजिए, आप एक झूठ बोलने से, लक्षात ठेवा, जर तुम्ही एक खोटं बोलता, you cannot enter the city of Jerusalem. आप यरूशलेम शहर में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे. तुम्ही यरूशलेम शहरामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. In Revelation 14 chapter, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, प्रकटीकरण 14 अध्याय, that 144,000, in their mouth there was no guile. वो 1,44,000 लोगों के बारे में लिखा है, उनके मुंह में झूठ नहीं था. आणि 1,44,000 त्यांच्या मुखामध्ये असत्य नव्हतं असं लिहिलेलं आहे. One of the method by which we tell lies is एक झूठ बोलने का तरीका इस प्रकार है, खोटं बोलण्याचा अजून एक तरीका आहे exaggeration. बड़ाई करना, बढ़ा के बोलना. आणि मोठ्या रीतीने जास्त करून सांगणं. In one particular meeting, एक खास मीटिंग में एका सभेमध्ये they told the first day itself 12,000 people came under it. पहले दिन में 12,000 लोग आया करके वे लोग कहे. ते म्हणाले की पहिल्या दिवसाच्या मीटिंगमध्ये 12,000 लोक होते. I was surprised. मैं उस बात को सुन के बहुत अचंभित आणि ते हुआ. ऐकून मला आश्चर्य झालं. The last day, Sunday, और आखिरी दिन इतवार के दिन, आणि शेवटच्या दिवशी रविवारी they took a head count. और हेड काउंट या जितने सारे गिनती में लोग लिए, आणि लोकांची मोजणी त्यांनी केले. 8,300. 8,300 लोग केवल. 8,300 लोक फक्त होते. That's the highest number. वो तो सबसे ऊंचा संख्या. सर्वात जास्त उंचांक होता. But what we were telling? और हम आगे क्या कहते थे? पण आम्ही काय म्हणतो, 12,000 आ गया. 12,000 लोग आ गए. 12,000 लोक आले. These all we tell and we think it's not a lie. और हम ये सब कहते हुए और सोचते नहीं कि ये झूठ है. हे सर्व बोलत असताना आपल्याला कळत नाही की आम्ही खोटं बोलत आहोत. Look at a businessman. एक व्यवसायी व्यक्ति को आप देखिए. एका व्यापाऱ्याला तुम्ही पहा, Take this sari. Say 1 year guarantee I will give. इस साड़ी को लीजिए, 1 साल का गारंटी देता साडी हूं. घ्या, 1 वर्षाची मी गॅरंटी देतो. You go and buy that sari, go and wash it. Within one wash, everything goes. और साड़ी को लेके घर पे एक बार धुलने से ही रंग चला जाता है. एकदाच त्याला धुतले असता तिचा सर्व रंग निघून जातो. One highly well-known businessman. एक बहुत ही जाना माना एक व्यापारी व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यापारी होता. He was listening to this subject called lie. इस झूठ शब्द के, इस विषय के बारे में वो ध्यान से सुन रहा था. ये खोटं बोलणं हा विषय तो लक्षपूर्वक ऐकत होता. He told me later. और बाद में उसने आके मुझसे कहा, शेवटी मला येऊन तो बोलला, After that day, I decided I will never exaggerate. और उसी दिन मैं निर्णय लिया कि मैं बातों को बढ़ा के नहीं बोलूंगा. आणि त्या दिवशी मी निर्णय घेतलो की मी बडाई मारून कोणती गोष्ट बोलणार Just for a moment, close your eyes. एक क्षण के लिए अपने आंखों को बंद कर. प्रियानो, क्षणासाठी आपले डोळे बंद करूया. Very soon we are going to enter in the new year. 12 months are being almost over now. बहुत शीघ्र ही हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं और इस 12 महीना समाप्ति पे है. आणि खूप लवकर नवीन वर्षात आपण पदार्पण करणार. 12 महिने असंच निघून जात आहे. Suppose you take a white sheet of paper and write how much lies you told from January 1st till today. मान लीजिए आप एक कोरा कागज लेके जनवरी 1 तारीख से लेके आज तक कितने झूठ बोले उसको लिखना शुरू करने से, एका कोऱ्या कागदावर जानेवारी 1 तारखेपासून आतापर्यंत बोललेले खोटे जर तुम्ही लिहायला लागलात, Oh my God. ओ हे परमेश्वर, ओ कितीतरी देवा, How many lies we have told. कितने सारे झूठ हम बोले हैं. हे देवा, आम्ही कितीतरी जास्त How खोटं can बोललो. you enter the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? कसं देवाच्या राज्यामध्ये आम्ही जाऊ. How can you stand with 144,000 on Mount Zion? सियोन पर्वत पे 1,44,000 लोगों के साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं? 1,44,000 सियोन डोंगरावर आपण कसं त्यामध्ये जाऊ शकतो. Lying is a sin. पाप सबसे झूठ सबसे बड़ा पाप. खोट हे पाप आहे. So this night,
और इस रात में आणि या सायंकाळच्या वेळेस surrender your life. हमारा जीवन को समर्पण हो कर। आपलं जीवन समर्पण करा. Lord, I have not committed murder. I have not broken the 7th commandment. हे परमेश्वर, मैं किसी का हत्या नहीं किया, 7वां आज्ञा का उल्लंघन नहीं हे किया, देवा आम्ही हत्या करून 7वी आज्ञा मोडलेली नाही. But I have told many lies. पर मैं कई बार झूठ बोला हूँ। पण मी पुष्कळ खोटं बोललो आहे. Forgive me, हे Lord. प्रभु मुझे माफ कर, प्रभू मला क्षमा कर. Forgive me, O हे Lord. प्रभु मुझे माफ। प्रभू मला क्षमा कर. Now we cannot make what they call on our own. We cannot deliver ourselves from the life of sin. हम अपने और इस पाप से अपना आप खुद छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। आणि आपण स्वतः या पापातून मुक्ती मिळवता आपल्याला येणार नाही. Suppose your servant breaks a glass cup every day. मान लीजिए आपका नौकर जो है रोजाना एक एक गिलास तोड़ता है। समजा तुमचा एक नौकर आहे, रोज एक ग्लास तो तोडतो. माफ किए. Every day after breaking the glass, he says, माफ किए. Forgive me. हर एक दिन उस कांच के ग्लास तोड़ने के बाद आके आपसे कहेंगे मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। रोज एक काचेचे ग्लास तोडून तो म्हणतो मला क्षमा करा, मला क्षमा करा. 30 days, 30 glasses broken. 30 दिन महीना का 30 ग्लास तोड़ दिया आणि हमारे। 30 दिवसामध्ये त्याने 30 ग्लास तोडून टाक. 30 days you ask forgiveness. 30 दिन तक वो माफी आपसे मांग। 30 दिवस तो माफीच मागतो. Who will bring those 30 glasses which are broken? उस 30 ग्लास जो टूट गया उसको कौन लौटाएगा? आणि 30 तुटलेले ग्लासची भरपाई कोण करणार? So to forgive you, somebody has to take the punishment. इसलिए आपको माफी मिलने के लिए कोई न कोई उसका सजा लेना चाहिए। तुम्हाला माफी मिळण्यासाठी कोणतरी ती दंड घेतलं पाहिजे. In Exodus 34 chapter verse 20, और निर्गमन 34 उसका 20, आणि निर्गम 34 अध्यायाचं 20 वचन. every firstling of an animal must be offered unto God. और सारे को जानवरों को पहला उठा परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में चढ़ाया आणि जाना चाहिए। जनावरांचं जे प्रथम आहे ते देवाला अर्पण केलं पाहिजे. But the firstling of an ass cannot be offered unto और God. इस गधे के पहलौटा को परमेश्वर के लिए भेंट करके चढ़ाया नहीं जा सकता। पण गाढवाचा जो ज्येष्ठ आहे त्याला अर्पण करता येत नाही. In the place of an ass, a lamb could be offered. उस गधे के बदले एक भेड़ का बलि चढ़ाया जा आणि सकता त्या है। गाढवाच्या ठिकाणी एक जे फेड आहे त्याचं अर्पण करता येईल. We were like that ass. हम उस गधे के मानंद थे। आपण त्या गाढवाप्रमाणे होतो. Jesus came. यीशु मसीह आया, पण येशू आला. He took your place and my place. उसने आप और मेरा जगह को अपने ऊपर लिया। तुमची आणि माझी जागा त्याने स्वतःवर घेतली. President Nixon had a press secretary called Colson. हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन के पास एक कॉल्सन बोल के एक सेक्रेटरी था। निक्सन जे अमेरिकेचे अध्यक्ष आहे, त्याच्याकडे कॉल्सन नावाची व्यक्ती होती. He was put in a prison. और जेल में डाला गया था। त्या व्यक्तीला बंदीगृहात टाकण्यात आलं होतं. 2 senators wrote a letter to President Nixon. 2 सेनेटर लोगों ने प्रेसिडेंट निक्सन से इस प्रकार चिट्ठी में लिखा। 2 सेनेटर लोकांनी निक्सन अध्यक्षांना असं पत्र लिहिलं. Sir, what he has done is a wrong thing. He must be punished. और जो उस गलती को किया उसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए। त्यांनी केलेली जी चूक आहे त्याबद्दल त्याला सजा मिळायला पाहिजे. But he's a young man. पर वो एक जवान व्यक्ति, पण तो एक तरुण व्यक्ती आहे. He should not suffer. वो नुकसान नहीं उठाना त्याला चाहिए। वेदना देऊ नका. I and my son will take his place. मैं और मेरा बेटा जो है उसके जगह लूंगा। मी आणि माझा मुलगा त्याची सजा घेतो. When Colson heard this, जब कॉल्सन इस बात को सुना, ज्यावेळेस कॉल्सननी ही गोष्ट ऐकली, is there a father and a son who will take my place? ऐसा कोई पिता और पुत्र है जो मेरा स्थान ले सकता है? असे कोण पिता आणि माता आहे का जे माझी जागा घेऊ शकते? He accepted Christ. और उसी वक्त उसने मसीह को ग्रहण कर लिया। तर तत्क्षणी ख्रिस्ताचा त्याने स्वीकार केला. One missionary went to a terrorist leader. एक मिशनरी एक टेररिस्ट आतंकवादी उसके नेता के पास गया। आणि एक जे मिशनरी होते जे आतंकवादीच्या पुढाऱ्याकडे तो गेला. You have kept our missionary for 3 years. आप हमारे मिशनरी को 3 साल तक बंधुआई में रखा। आमच्या मिशनरीला 3 वर्ष तुम्ही कैद करून ठेवला आहे. Release him. उसको छोड़ दीजिए। त्याला सोडा. I am a family man. मैं एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ। मी एक पारिवारिक व्यक्ति आहे. I will take his place. मैं उसका जगह लेता हूँ। मी त्याची जागा घेतो. That leader told. उस टेररिस्ट लीडर ने जवाब दिया, आणि तो पुढारीने असं उत्तर दिलं, What a stupid man you are. आप कैसा मूर्ख जवाब दे तू रहे हैं। किती मूर्ख व्यक्ती आहेस. How can you offer yourself in the place of that missionary? आप अपने जगह उस मिशनरी के बदले में कैसे दे सकते त्या हैं? मिशनरीच्या जागेवर तू स्वतःला कसं देऊ शकतोस? My Lord has taught me. मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा सिखाया। हो, माझ्या देवाने मला ते शिकवलं आहे. That missionary was later released. और उस मिशनरी को बाद में छोड़ दिया गया। नंतर त्या मिशनरीला सोडून देण्यात आलं. But this leader wrote a letter to this brother.
और इस भाई के उस टेररिस्ट लीडर ने इस प्रकार एक चिट्ठी लिखा, आणि त्या भावाने त्या पुढाऱ्याने या भावाला एक पत्र लिहिलं. I am a hard-hearted man. मैं बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति मी हूँ. कठोर हृदयाला व्यक्ती आहे. But when you spoke, you will stand for that mystery and suffer. That broke my heart. पर जिस समय आपने कहा कि आप उस मिशनरी के बदले में कष्ट उठाएंगे, मेरा दिल टूट गया. पण ज्यावेळेस तुम्ही म्हणाला त्या मिशनरीच्या जागेवर मी कष्ट भोगायला तयार आहे, पण त्यावेळेस माझं अंतःकरण Look at the तुटलं. Lord Jesus Christ tonight. आज रात आप यीशु मसीह की ओर देखिए. आज रात्री येशूकडे पहा. What sin he had committed with his hands. वो अपने हाथों से कौन सा पाप किया, त्याने आपल्या हाताने कोणतं पाप केलं होतं. What sin he had done in his body. उसके शरीर में उसने कौन सा पाप किया. त्याच्या शरीराने त्याने कोणतं पाप केलं Look होतं. at his hands pierced by the rusty nails. और उस हाथों को देखिए जो उस कांटों के द्वारा, उसके किलों के द्वारा भेदा गया. आणि त्या खिल्याच्या द्वारे मारलं गेलं ते हात तुम्ही पहा. Look at his back. उसके पीठ की ओर देखिए. त्याची पाठ पहा. Plowed like a field, ribbons of flesh are hanging. और उसके पीठ जो है एक खेत जो हल चलाया गया उसके माने फाड़ा गया. नांगर मारणाऱ्यासारखी त्याची पाठीवर मारण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी मांस लटकत आहे. Look at his head और उसके सर को देखिए त्याचे डोकं पहा. with a crown of thorns. और कांटा का एक मुकुट उस पर है. काट्यांचं मुकुट आहे. He's standing in your midst. वो आपके बीच में खड़ा है. तो तुमच्यामध्ये उभा आहे. My son, हे मेरे बेटे, हे माझ्या मुला, my हे daughter, मेरे बेटे, हे माझ्या मुली, I suffered on your मैं behalf. तेरे बदले में कष्ट उठाया हूँ. तुझ्या बदल्यात मी कष्ट उचलले Wherever आहे. you are, आप जहाँ कहीं भी हो, तुम्ही कुठेही असो, close your eyes. अपने आंखों को बंद आपले डोळे करें, बंद कर. Open your heart. अपने हृदय को आपले खोलिए, हृदय उघडा. Open your mouth. अपने मुंह को होय खोलिए. आपलं तोंड उघडा. Lord, I come to you, हे Lord. प्रभु, मैं तेरे नजदीक हे आता हूँ. प्रभू मी तुझ्या जवळ येत आहे. Wash me with thy precious तेरे blood. मोले लहू से मुझे धो ली. तुझ्या मौलवान रक्ताने मला धुवून टाक. This God, a personal God, will become a personally, you will experience and taste God in your life tonight. ये जो परमेश्वर जो व्यक्तिगत है, आपको व्यक्तिगत तौर पे आपका बन जाएगा. व्यक्तिगत देवाला व्यक्तिगत रीतीने आज रात्री तुम्हाला मिळवता येईल. Why? किस लिए? का? The end is coming. क्योंकि अंत नजदीक. शेवट जवळ आलेला आहे. Revelation 6th chapter we read. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. प्रकटीकरणाच्या पुस्तकाच्या 6व्या अध्यायामध्ये The leaders and the kings and all that they will call unto the mountains and the hills. और सारे राष्ट्र के नेताएं पहाड़ों से और पहाड़ियों से इस प्रकार चिल्लाएंगे, सर्व राष्ट्राचे नेता डोंगरावरून आरोळी मारतील. Cover us. हमारे ऊपर गिर जाओ. हो आमच्यावर पड. They will never cover you. वो डाप नहीं सकते हैं. पण ते तुमच्यावर पडणार The नाही. day of wrath has come. परमेश्वर का क्रोध का दिन आ रहा है. देवाच्या क्रोधाचा दिवस येत Now is the आहे. day of grace. वो अभी अनुग्रह का समय है. आता कृपेचा काळ आहे. Open your heart and come closer to Jesus. हृदय खोलिए, प्रभु के नजदीक आइए. तुमचं हृदय उघडून देवाजवळ या. That way you can experience God is not of a consuming fire. He's a loving God. वो आज आप जान पाएंगे कि वो उस परमेश्वर धधकती हुई आग नहीं, वो प्रेम का सागर. आज तुम्हाला कळेल देव भस्म करणारी अग्नी नव्हे तर ती प्रीती आहे. In the coming days you will hear how you can build up your life in God. आने वाले दिनों में परमेश्वर में आप अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सुनेंगे. देवामध्ये तुमच्या जीवनाला कसं वाढवता येईल तुम्ही येणाऱ्या दिवसामध्ये ऐकणार. In Romans 6 chapter 17th verse, there is a form of doctrine you have to obey to come closer to this God. रोमी 6वां अध्याय उसके 17वां वचन में लिखा है, एक प्रकार का उपदेश है जिसको आपको मानना क्रम पड़ेगा. 6 अध्यायाच्या 17 वचनामध्ये असं लिहिलेले उपदेशाचा एक संच आहे त्याचा पाठपुरावा तुम्हाला करावा लागेल. You will be hearing in these coming days. आने वाले दिनों में इन बातों को आप सुनेंगे. येणाऱ्या दिवसात तुम्ही ते ऐकणार. My point is, the मेरा end- विषय यह है, पण end माझा is- विषय end is अंत coming. नजदीक है. शेवट जवळ आहे. How can we say? हम कैसे कह सकते हैं? आपण कसं तारण मिळू Read शकतो. Luke's Gospel 21, 29 and 30. लूका 21 अध्याय 29 और 30. लोक 21 अध्याय 29 आणि 30. उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोंपलें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है. त्याने त्यास दाखला सांगितला, अंजीर व सर्व झाडे पहा, ती फुटू लागली म्हणजे तुम्ही ते पाहून आपणच ओळखता की आता उन्हाळा जवळ आला आहे. And he spake to them a parable, behold the fig tree and all the trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. Summer is now very nigh at hand. आप देख सकते हैं कि ग्रीष्म का बहुत नजदीक है. आता ग्रीष्मकाल जवळ आहे तुमच्या लक्षात येईल. Fig tree is the emblem of the Jewish nation. अंजीर का वृक्ष जो है यहूदियों का वो चिन्ह है.
आणि अंजिराचं झाड यहुदी लोकांचं बोध चिन्ह आहे. In AD 70, their temple was destroyed. 17वीं सदी में उनका जो मंदिर है तोड़ा गया. 17व्या शतकामध्ये त्यांचं मंदिर मोडण्यात आलं. In AD 130, they were scattered all over the world. 130 सदी में वे पूरा दुनिया में फैलाया गया. 130 शतकामध्ये संपूर्ण जगभर ते विखरून गेले. In 1917, November 2, Balfour Declaration made them to come back to their land. 1912 नवंबर 2 तारीख बाल्फोर डिक्लेरेशन के द्वारा, घोषणा के द्वारा वे लोग अपने देश को नोव्हेंबर लौटा. 12-19 मध्ये वाल्फेअर डिक्लेरेशन द्वारे ते सर्व एकत्रित आले. Now read Daniel book, 8th chapter, 8th verse. अभी दानियल की किताब 8वां अध्याय उसके 8वां वचन पढ़िए. दानिएल 8व्या अध्यायाचं 8वं वचन वाचूया. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संति देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे. तो बकरा अति प्रबल झाला, तो बलिष्ठ झाला असता त्याचे मोठे शिंग मोडले, आणि त्याच्या ऐवजी त्याला 4 बाजूस 4 ठळक शिंगे फुटली. He goat stands for Greek's kingdom. और यूनानी साम्राज्य को दिखाता है इस बकरा. आणि हा जो बकरा म्हणजे ग्रीक राज्य साम्राज्याचं दर्शक आहे. Alexander the Great was the supreme king of that. उस यूनानी उस साम्राज्य का जो बादशाह था सिकंदर बादशाह. आणि युनानी साम्राज्याचा जो अतिशय थोर पुरुष होता तो सिकंदर होता. When he died, his kingdom was scattered, divided into 4 kingdoms. और जब उसका मृत्यु हुआ उसके साम्राज्य 4 भाग में बट गया. आणि त्याच्या मरणानंतर त्याचं साम्राज्य 4 राज्यामध्ये विखुरलं गेलं. Now read Daniel 8 chapter 13 and 14. अभी दानियल 8वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए. दानिएल 8वां अध्याय 13-14 वचन वाचूया. तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना. फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रोंदा जाना कब तक होता रहेगा. तेव्हा मी एका पवित्र पुरुषास बोलताना ऐकले. दुसरा एक पवित्र पुरुष त्या बोलणाऱ्यास म्हणाला, हा नित्याचा यज्ञ भाग, विध्वंसमूलक पातक, पवित्र स्थान व सैन्य ही पायाखाली तुडवणे ह्या दृष्टांतात पाहिलेल्या गोष्टी कोठवर चालणार. तो म्हणाला 2300 दिवस त्यानंतर पवित्र स्थानाची शुद्धी होईल. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? And he said unto me, Unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. In prophetical language, a day is compared to a year, and year as a day. भविष्यवाणी की भाषा में एक दिन को एक साल और एक साल को एक दिन करके माना जाता आणि है. भविष्यवाणीच्या शब्दामध्ये एका दिवसाला वर्ष आणि वर्षाला दिवस गणण्यात येते. Already a part of it I have fulfilled in history. इतिहास में हम देखने से इसमें से एक भाग संपन्न हो चुका है. यापैकी एक भाग इतिहासामध्ये पूर्ण झाला आहे. Here the angel who gave 2300 years, और यहाँ पर जो सरदूत 2300 साल के बारे में कहता है, आणि एक देवदूत 2300 दिवसाबद्दल या ठिकाणी बोलत आहे. his name was Palmino. उस सरदूत का नाम था पैलमिनो. पैलमिनो त्याचं नाव आहे. The meaning of the word Palmino was computer angel. और उस पैलमिनो शब्द का अर्थ है कंप्यूटर एंजल. आणि पैलमिनो या शब्दाचा अर्थ आहे संगणक देवदूत. We think computer is discovered now. Even during the Daniel's time, that word computer angel was there. हम समझते हैं कि इस कंप्यूटर का आविष्कार इन दिनों में हुआ है, पर दानियल के दिनों में ही इस कंप्यूटर सरदूत के बारे में लिखा गया या है. संगणकाचा आविष्कार आता झालेला असं आपण म्हणतो, परंतु दानिएलच्या काळामध्ये तो देवदूत संगणक असा होता असं लिहिलेलं आहे. Bible scholars says count the day from the first time when Alexander the Great invaded Palestine. और सिकंदर बादशाह उस पैलेस्टाइन देश के ऊपर चढ़ाई जब किया, उस दिन से आप सालों को गिनो. आणि राजा सिकंदरने पॅलेस्टाईन देशामध्ये ज्यावेळेस आक्रमण केलं तेव्हापासून दिवसाची मोजणी करा. Count 2300 years. और उससे लेके 2300 साल तक आप गिनिए. आणि 2300 दिवसापर्यंत तुम्ही मोजणी करा. They counted it. उन्होंने इस प्रकार गिन के त्यांनी देखा. मोजलं. It came 1967.
और 1967 साल में वो समाप्त होता है। आणि 1967 असं त्यांनी गणती केली. In 1948, Israel got their state. और 1948 में इजराइल को अपना देश वापस ही मिला। 1948 मध्ये इस्रायल लोकांचं स्वतंत्र राष्ट्र झालं. In 1967, June 2, Jerusalem came under their control. और यहूदियों के हाथ में 1967 साल में यरूशलेम काबू में आया। जून 2 तारीख 1967 मध्ये त्यांच्या हातात ते राज्य आलं. God has fulfilled that promise. परमेश्वर इस वायदा को पूरा कर चुका है। परमेश्वरानं वचन पूर्ण केलं. Look at the global warming. और सारे पृथ्वी में जो होने वाला गर्मी के बारे में आणि देखिए। सर्व जगभर होणारी ग्रीष्मता गर्मी पहा. 4 feet of snow is already melted in Mount Everest. और एवरेस्ट पहाड़ के ऊपर 4 फीट तक बर्फ जो है पिघल चुका है। आणि एव्हरेस्ट डोंगरावरचं 4 फूट पर्यंत जे बर्फ आहे ते वितळून गेलं आहे. In 1927, economic depression started in Indonesia. और 1927 में इंडोनेशिया देश में आर्थिक वाणिज्य रीति का गिरावट शुरू हुआ। 1927 पासून इंडोनेशियामध्ये जे वाणिज्याची घसरण होऊ लागली. Later, Afghanistan. उसके बाद अफगानिस्तान में बढ़ा। त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये झालं. Next, Pakistan. और उसके बाद पाकिस्तान में। त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये. When he came to USA, whole world came to know it. और जब इस घटना यूएसए तक अमेरिका तक पहुंचा, सारे विश्व को इस गिरावट के बारे में पता आणि ज्या चला। वेळेस अमेरिकेपर्यंत हे पोहोचलं त्यावेळेस सर्व जगाला हे कळून They आलं. have found out a site where Solomon's temple was there. इन्होंने उस जगह को खोज निकाला है जहां पर सुलेमान का मंदिर था। सुलेमानने बांधलेलं देऊळ कुठं आहे हे ठिकाण त्यांनी शोधून काढलं. In Haifa city, a cow gave birth to red heifer. और हाइफा शहर में एक गाय जो है कैसे एक बछड़ा को पैदा किया, आणि हैबाग शहरामध्ये एका गायला वासरू झालं. Red calf. जिसका रंग लाल था आणि त्याचं रंग लाल होतं. It is meant for sacrifice. और ये एक बलिदान के लिए तैयार है। आणि एका बलिदानासाठी ते तयारी असे So दर्शविते. Jewish rabbi said, this is the sign that we have to build the temple. और यहूदी याजक लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये जो चिन्ह है हम मंदिर हमारा बनाना चाहिए। आणि यहुदी रब्बीचं म्हणणं असं आहे की याचं चिन्ह असं आहे की आपण आता मंदिर बांधलं पाहिजे. In 1996, November 30, और 1996 नवंबर 30 नोव्हेंबर 30, 1996 मध्ये a space star came rushing towards the earth. और एक आकाश में ऐसा एक ध्रुव या एक तारा जो है पृथ्वी की ओर नजदीक आया। आणि आकाशातून एक तारा जे पृथ्वीच्या दिशेने आला. It missed about 58 lakh kilometer distance. और 58 लाख किलोमीटर नजदीक से वो तारा निकल गया। 58 लाख किलोमीटरच्या अंतरावरून त्याने जे अंतर आहे ते गमावलं. According to the astronauts, they say 58 lakhs is the only wink, that's all. और इस 58 लाख जो किलोमीटर है वो एक क्षण भर का दूरी है बस। आणि वैज्ञानिक म्हणतात 58 लाखची ही जे किलोमीटरची दूरी आहे ते एका क्षणामध्ये ते तय करतं. And one more star is rushing towards earth. एक और जो है धूमकेतु, एक तारा जो है पृथ्वी की ओर नजदीक आ रहा है। अजून एक तारा जे भूमंडळाच्या अगदी जवळ येत आहे. 260 crore weight. 260 करोड़ उसका किलो वजन है। आणि 268 किलो त्याचं असं वजन आहे. 12 kilometer circumference. उसका गोलाई जो है 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर असं त्याचं क्षेत्रफळ आहे. The speed of that star is 1,20,000 per hour. एक घंटे में 1,20,000 का उस किलोमीटर वेग में वो आ रहा है। 1,20,000 किलोमीटरच्या वेगाने ते येत आहे. They say by 2014, March 21, it will come near earth. वे लोग कहते हैं 2014 मार्च 21 तक पृथ्वी के नजदीक वो पहुंच जाएगी। मार्च 21, 2014 पर्यंत ते पृथ्वी भूमंडळाच्या जवळ येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. We are not telling. हम ये कह नहीं रहे हैं, आम्ही हे नाही बोलत. The end is near. अंत नजदीक है। शेवट जवळ आहे. The end is near. अंत नजदीक है। शेवट जवळ आहे. You have to prepare yourself. क्या आप उसके लिए तैयार हो रहे हो? तुम्ही त्यासाठी तयार होत आहात काय? Jude 20th verse we read. युदा के किताब 20वें वचन में पढ़ते हैं, यहूदा 20व्या वचनामध्ये Build up your most holy faith. आपका अति पवित्र विश्वास को बनाइए, तुमचा अति पवित्र विश्वासाची बांधणी करा Praying in the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना आणि कीजिए। पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा. An American pastor prayed only 22 minutes. It says. अमेरिकन पास्टर केवल
22 मिनट तक प्रार्थना करता है। अमेरिकेचे जे पास्टर आहे फक्त 22 मिनिटे प्रार्थना A करतात. Japanese pastor prays for 44 minutes. और जापानीज पास्टर जो है 44 मिनट तक प्रार्थना करता आणि है। जपानीज जे पास्टर आहे ते 44 मिनिटं प्रार्थना A करतात. South Korean pastor prays for 80 minutes. और साउथ कोरिया के जो पास्टर है 80 मिनट तक प्रार्थना करता साऊथ कोरियाचे जे पास्टर 80 मिनिट प्रार्थना A करीतात. Chinese pastor prayed for 1 hour 25 minutes. है। और एक चाइनीज पास्टर जो है 1 घंटा 20 मिनट तक प्रार्थना करता आणि है। एक चायनीज पास्टर 1 तास 25 मिनिटं तो प्रार्थना करीतो. Early days, a CPM believer prayed 3 hours. और आरंभ के दिनों में एक सीपीएम कलीसिया के जो विश्वासी थे 3 घंटा प्रार्थना करता आणि पहिल्या दिवसामध्ये सीपीएमचे जे विश्वासू होते 3 तास प्रार्थना करीत असे. A servant of God prayed 6 hours. और परमेश्वर के दास 6 घंटा तक प्रार्थना करते आणि देवाचे सेवक 6 तास प्रार्थना करीत असे. Our senior pastor trained us to pray 6 hours. हमारे जो मुख्य जो पास्टर हमें 3 घंटा तक प्रार्थना करने के लिए सिखाते थे। आमचे मुख्य पास्टर 6 तास प्रार्थना करायला शिकवत असे. Dear brother, dear sister, प्यारे भाई प्यारे बहन, प्रिय बंधू आणि बहिणींनो, now we know all things about land and materials and so many other things we talk इन about. दिनों में हमें जमीन के बारे में और साधनों के बारे में बहुत सारा जानकारी इसके या बारे में कहते हैं। दिवसामध्ये जमिनीबद्दल इतर गोष्टीमध्ये आपल्याला पुष्कळ माहिती आहे. One doctorate student came to Einstein. एक डॉक्टरेट पढ़ा हुआ व्यक्ति आइंस्टाइन उस वैज्ञानिक के पास आया। आणि डॉक्टरीन फिरलेला एक व्यक्ती इन्स्टीन नावाच्या Sir, is वैज्ञानिकाकडे आला. there anything more power in the world we have to discover? और उन्होंने ऐसा सवाल किया, कुछ और भी बड़ा सामर्थ्य है क्या जिसको हम खोज निकालना तो है? म्हणाला अजून अशी कोणती मोठी शक्ती आहे का की ज्याचं संशोधन करणं बाकी आहे. He gave only one sentence. उन्होंने एक ही जवाब, एक अक्षर का जवाब त्याने दिया। एका वाक्यात उत्तर दिलं, Find about prayer. परमेश्वर के प्रार्थना के बारे में आप खोजिए, प्रार्थनेचा शोध करा. They know the effect of prayer. क्योंकि वे जानते हैं उस प्रार्थना का कितना असर है। प्रार्थनेचा प्रभाव त्याला How माहित is आहे. your prayer life tonight? आज रात आपके प्रार्थना जीवन किस प्रकार? आज रात्री तुमची प्रार्थना अवस्था कशी आहे. End is near. अंत नजदीक है। शेवट जवळ आहे. Build up your most faith and pray in the Holy Ghost. आपका उस सर्वश्रेष्ठ विश्वास, पवित्र विश्वास को बनाइए, अति प्रार्थना पवित्र विश्वास, कीजिए। पवित्र विश्वासाने तुम्ही बांधणी करा. And 24th, Jude 24 we read, और युदा 24 में पढ़ते हैं, यहूदा 24व्या वचनामध्ये He will present you. वो अपने आप को भेंट करेगा। आणि तो स्वतःला प्रगट करेल. You need not try. आप उसको खोजने की जरूरत तुम्ही नहीं। त्याला शोधू नका. You keep yourself in the love of God. Pray. Build up your most holy faith. आप परमेश्वर का प्रेम में बने रहिए, प्रार्थना में और विश्वास में बढ़ते रहिए, वो प्रकट करेगा अपने आप। तुम्ही देवाच्या प्रीतीमध्ये विश्वासामध्ये वाढत राहा, तो प्रगट करील. He will present you. वो अपने आप को आपके सामने प्रकट तो करेगा। स्वतःला तुमच्या समोर प्रगट करेल. In one tarrying meeting, एक टैरिंग मीटिंग एका टॅरिंग मीटिंग मध्ये Jesus came and spoke and laughed with one brother. और एक व्यक्ती के पास यीशु मसीह आया, उनको देख के हंसा और उसको आश्वासन दिया। एका व्यक्तीकडे येशू ख्रिस्त आला, त्याला पाहिलं, त्याने स्मित हास्य केलं. Second brother, he just looked. दूसरा भाई के पास केवल एक नजर दिया। दुसऱ्या भावाला त्याने फक्त पाहिलं. Third brother, he did not look. और तीसरा भाई के को देखा ही नहीं। तिसऱ्या भावाला त्याने पाहिलं पण नाही. Lord, why this difference? तो इन्होंने पूछा, ये प्रभु, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आपका ये व्यवहार क्यों? देवा, हे वेगवेगळ्या व्यक्ती बरोबर तू वेगवेगळ्या रीतीने का असं व्यवहार केलंस. This first brother needed that encouragement. उन्होंने जवाब दिया कि पहला इस व्यक्ति को इस प्रकार एक प्रोत्साहन चाहिए। येशू म्हणाला, या पहिल्या व्यक्तीला अशा प्रकारचं उत्तेजनाची गरज होती. Second brother, just a look, he will run. और दूसरा भाई को केवल एक नजर देना काफी है, वो आणि चलता रहेगा। दुसऱ्या भावाला फक्त पाहिलं असता पुरेसा आहे, त्याचं सर्व बरोबर होऊन जाईल. Third is my property. और तीसरा जो है मेरा निच भाग है, आणि तिसरा जो आहे ती माझी धन He संपत्ती will आहे, not move. वो कहीं नहीं चलेगा। तो कधी ढळणार He नाही. is my jewel. वो मेरा उस मूल्य वस्तु आभूषण। है, आभूषण है। तो माझी संपत्ती आहे. I am going to come and take him out. मैं शीघ्र आके उसे अपने पास इकट्ठा करने जा आणि रहा मी हूं। लवकर येऊन आभूषण माझ्याकडे एकत्रित करील. Shall we close our eyes? हम अपने आंखों को बंद करें, या आपले डोळे बंद करूया. Shall we silently stand in the presence of God? निशब्द होकर हम प्रभु के समूह में खड़े हो जाएं। या आपण शांत रीतीने देवासमोर उभे राहूया. The end is coming. अंत नजदीक। ओ, शेवट जवळ आलेला आहे. All the days we heard an emotional preaching. बहुत दिनों तक हम एक व्यवहार में आया हुआ एक इमोशनल प्रीचिंग प्रचार सुने होंगे। आणि बरेच दिवसामध्ये आपण भावनात्मक रीतीने देवाचं वचन ऐकलं But असेल. today I gave it on the word of God. How the end is very, आज very near. एक भावात्मक रीति से नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पे अंत कैसे आएंगे मैं आपको भेंट। परंतु आज देवाच्या वचनाच्या आधारावर मी तुम्हाला बोललो, शेवट कसं होईल. How many want to be in that
jewel group or the property of Jesus group? आप में से कितने से उस आभूषण के झुंड में या प्रभु यीशु के झुंड में पाया जाना चाहते हो? तुमच्यापैकी किती लोक येशूच्या त्या संपत्तीमध्ये त्या आभूषणाच्या कळपामध्ये पाहू इच्छितात? Do you really want to come in that state? क्या उस अवस्था में सचमुच आप आने चाहते हो? खरोखरच त्या अवस्थेत तुम्हाला यायचं आहे काय? If you want to come to that stand, close your eyes, lift up your right hand, say, Lord, I want to become thy property. यदि आप उस अवस्था में आना चाहते हो तो अपने आंखों को बंद करें, अपने दाहिने हाथ को उठाए के कहिए, प्रभु सच में मैं तेरा भाग बनना चाहता अच्छा हूं. असेल तर उंच हात उंच करून प्रभूला बोला, प्रभू खरोखर मी तुझी संपत्ती बनू इच्छितो. The Lord is walking in our midst. प्रभु हमारा बीच में चल फिर रहा है. प्रभू आपल्यामध्ये चालत फिरत The आहे. moment you surrender your life entirely into the hands of God, जिस क्षण में आप अपने जीवन संपूर्ण तरीके से उसके हाथों में समर्पण ज्या क्षणी करोगे, तुमचं जीवन पूर्ण त्याच्या हातात तुम्ही द्या. any type of sickness, God, He will be healed. कोई भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आपको छुटकारा देगा. कोणताही आजार असू द्या, प्रभू तुला सुटका Because देईल. where God is there, sickness cannot dwell there. जहाँ प्रभु है वो बीमारी वास नहीं कर सकता. ज्या ठिकाणी परमेश्वर आहे तिथं आजार राहू शकत नाही. Why cancer is there? कैंसर क्यों है? कॅन्सर का आहे? Why diabetes is there? डायबिटीज क्यों का है? मधुमेहाचा आजार Why आहे? blood pressure is there? ब्लड प्रेशर क्यों का है? रक्तदाबाचा Why आजार आहे? asthma and TB are there? आस्मा और टीबी क्यों है? का दमा आणि कर्करोग आहे? Why skin diseases are troubling your life? चर्म रोग क्यों आपके शरीर को तंग कर का रहा है? आजार तुमच्या शरीराला धडलेला आहे? There is a gap. क्योंकि वहाँ पर एक दरार है. त्या ठिकाणी एक रिक्त जागा आहे. You are not a property of the Lord. क्योंकि आप